Hello students, in our previous lecture we had ended with the definition of non-uniform motion and we are going to continue from that thing. I hope that you are regular with your lectures, you are making the notes in your registers, in your notebooks and not wasting your time and studying hard. So continuing in that way, we will study what are the velocities which are related or how the velocity takes its form in the non-uniform motion. So, what are the velocities related to the non-uniform motion? This is our first topic for today's video. First velocity is variable velocity. An object is said to have variable velocity if either its speed or direction of motion or both changes with time. What is the variable velocity? वेरिएबल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टाइम के साथ चेंज करता है. यानी कि कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें उसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज करेगी, तो कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था वो चेंज होगी. कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं इन विच वी विल ऑब्जर्व द चेंजेस इन बोथ द थिंग्स. Whether we will observe the change in speed, we will observe the change in direction of motion, or we will observe the change in both direction of motion and speed with respect to time. Such a velocity or the motion related to such a velocity is said to acquire or is related to the non-uniform motion. Second velocity related to the non-uniform motion is our average velocity. Average velocity. What is average velocity? The average velocity is equal to, it is equal to the ratio of change in position or displacement to the time interval, or average velocity, which is simply denoted by the symbol v. v के ऊपर जब ये आ गया, ये लाइन शो हो गई, बार शो हो गया, then this bar indicates that we are not considering the simple velocity, we are going to consider the average velocity in this case. This bar represents this simple thing. Average velocity is nothing but equal to the ratio of change in position. Change in position means delta x. If x is the position, change in position is delta x or x2 minus x1. That is the change in position. To the time interval, that is delta t or t2 minus t1. This simple thing is our average velocity. Average velocity is nothing but the ratio of change in position or displacement to the time interval. Change in position or displacement means x2 minus x1, or simply by using the simple mathematics delta x. Time interval means t2 minus t1, or by using simple calculation is equal to delta t, or by simple denotation, or it is denoted by delta t. Now, if you remind that I have considered or I have explained you the position time graph in the case of uniform motion, and we have proved there that the slope of position time graph in uniform motion is nothing but equal to velocity of object.
we have considered the position time graph, or we have explained, I have explained you the position time graph for the uniform motion, and we have considered the simple thing over there that the slope of that graph is nothing but equal to the velocity. Here we have to prove that the average velocity of the object moving with non-uniform motion, again I am not going to repeat the word non-uniform again and again, as you know that we are considering the non-uniform motion, so all the cases are related to that motion only. The average velocity of an object moving in non-uniform motion is equal to the slope of the graph, slope of that graph, or the straight line related to a small portion of that graph. How? Consider that important article. Consider an object moving with variable velocity. एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. Position time graph is given by this. Suppose we have a point A and we have point B in this graph, which correspond to the time t1 and time t2 respectively. This is our time axis. This is our position axis. The position coordinate corresponding to point A is x1 and corresponding to the point B is x2 respectively. We have considered, suppose, a tangent or a straight line in this portion. This is our straight line which I have considered. So I hope this simple graph, how I have drawn this graph, is clear to you. Now, what is the slope, or how you can write the value of the change in position in the time interval t2 minus t1? किस तरीके से पोजीशन चेंज हुई टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में? पहले पोजीशन टाइम t1 पर x1 थी, अगेन टाइम t2 पर पोजीशन x2 थी, टाइम t1 पर पोजीशन x1 थी और टाइम t2 पर पोजीशन क्या थी? x2 थी. तो पोजीशन t2 माइनस t1 इंटरवल में कितनी चेंज हुई? चेंज इन पोजीशन कितना आया? सिंपल, वेरी सिंपल. रेफर टू द प्रीवियस वीडियोज. इज इक्वल टू x2 माइनस x1. नाउ ये पोर्शन क्या होगा भाई? x2 माइनस x1 होगा या डेल्टा x होगा. ऑन सिमिलर वे दिस पोर्शन इज डेल्टा t. सिंपल है भाई, डेल्टा t t2 माइनस t1 डेल्टा x यानी कि x2 माइनस x1. I have done nothing. I have simply shown those portions in our graph. In our position time graph, I have shown both of them. So, the change in position in the time interval t2 minus t1 is nothing but equal to x2 minus x1. Slope of straight line. यहाँ एक line consider की थी. Just 2 minutes ago, I have considered a line over here. What is the slope of that straight line? The slope of that straight line is equal to nothing but equal to x2 minus x1 by t2 minus t1 और डेल्टा x by डेल्टा t. स्लोप क्या होता है किसी लाइन का? y by x. इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y एक्सिस पे कितनी वैल्यू है? डेल्टा x है. x एक्सिस पर इस पोर्शन की कितनी वैल्यू है? डेल्टा t है. तो स्लोप क्या होगा? y by x. y एक्सिस पर वैल्यू डेल्टा x है, x एक्सिस पर वैल्यू डेल्टा t है, तो स्लोप बन जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा t. स्लोप इज नथिंग बट सिंपली इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t. अब ये डेल्टा x बाई डेल्टा t किसके बराबर था प्रीवियसली? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x बाई डेल्टा t?
it is nothing but equal to the average velocity. I have told you average velocity is equal to delta x by delta t. लिखवाई थी definition. I have defined this important term in this particular video only, that average velocity is equal to delta x by delta t. Thus we are arrived at the important relation that this thing is equal to average velocity, or average velocity is equal to the slope of the straight line. And this important thing we need to prove for the case of average velocity in the case of non-uniform motion. And we have also proved a similar statement related to it in uniform motion. That is when, if you haven't remembered, consider your previous pages of your notebook and see that I have done the position time graph of uniform motion, and there we have proved that the velocity of an object is equal to the slope of position time graph. So in this similar way, the average velocity is equal to the slope of straight line of that particular position time graph in the case of non-uniform motion. I hope these things are clearing to you. Moving ahead to the next thing. Next important thing is our instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है भाई? वही चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं. पहले जो चीज़ें थी वो यूनिफॉर्म मोशन में थी. कुछ भी हो, डेफिनेशन तो वही है कि एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. So third velocity is nothing but instantaneous velocity. What is the instantaneous velocity? Instantaneous velocity of an object is nothing but the velocity of an object at the small time instant t. सपोज एक टाइम t पर वेलोसिटी की कितनी वैल्यू है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. एंड इट इज गिवन बाय लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. यानी कि एवरेज वेलोसिटी का हमने लिमिट ले लिया तो हमारे पास क्या आ गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई. एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोगों ने लिमिट ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया भाई? हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई. नाउ जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है. जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है दैट इज़ और दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. तीनों तरीके की, तीनों टाइप्स की वैल्यू मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्वायर कर सकती है. Three type of values can be acquired by our instantaneous velocity, which are positive, negative or zero. In this way we have completed the non-uniform motion. Non-uniform motion क्या है? उससे related तीन important velocities. That is average velocity. Average velocity कुछ नहीं है भाई, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हमारी एवरेज वेलोसिटी है. किसी भी इंस्टेंट पर हम कोई वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी. का मतलब क्या है? एक ऐसी वेलोसिटी जो वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएट का मतलब क्या है? चेंज होना. यानी कि ऐसी वेलोसिटी जो चेंज होती है पोजीशन के साथ या टाइम के साथ, उसे हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग. इफ़ यू आर लाइक कि नहीं समझ आ रहा भाई, डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. एक चीज़ समझ नहीं आती, एक बार देखो, दो बार देखो, तीसरी बार उस चीज़ के अंदर इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, इतनी वो नहीं है कि आपको समझ ना आए. दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो बी स्टडी हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम, recapitulate your problems, your things, you will get an achievement and success in your life. Thank you. Study hard.